Good morning, everyone. श्रद्धांजलि गुड मॉर्निंग तो समस्ते टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ तापर क्लास टा को स्टार्ट करबा। कौन कि मु सबू एपारे जाके एमती बुले 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 गोटे बाड़ी कहबी 10टा बेले मो क्लास सब आसिक जॉइन होबा बोधे। प्रिपरेशन केमिति चलीची? जल्दी जल्दी जॉइन हुआ क्लास स्टार्ट करवा। आज हमारा प्रैक्टिस सीरीज 2 जति क्वेश्चन काली ठु बळका रहितला सेति की प्रैक्टिस करके आ किछि नुवा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। अणचाश जन छुआ क्लास करिबो केतेटा बेले 10टा बेले एबे को 10टा बेले भी हमको निद लागुच आ हमें सोई पडुछु तले जे क्लास आणुची से क्लास नहीं कि काई आसीबो। 2 मिनिट पळैलाणी क्लास स्टार्ट हवार 10टा 2 हे सालाणी 10टा 3 हे सालाणी तम मानकर देखा नाही कि साक्षात नाही। हो 48 44 अरे अरे कथारे अच्छी जाचिले लोक फुले हुंती से भाया अवस्था और नीतिदिनिया कुणिया जो ये ठीक अच्छे जार इच्छा क्लास कर जार इच्छा क्लास कर दी मोर क्लास करियर अच्छी क्लास करके पळेबी। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट एलआरई प्रिंसिपल सजेस्ट कौन दैट स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज शुड कौन करवा दरकार बी एजुकेटेड विथ नॉन डिसेबल पीयर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट अप्रोप्रिएट ना always be placed in a general education classroom regardless of their needs ना only attend school for half days to avoid overstimulation ना be taught by a specialized teacher in one-to-one setting at all times। कोटा हबा पिला माने गोटे लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट जोटा हमें कहूचे सीडब्ल्यूएसएन चिल्ड्रेन मानक पाई
चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स तांको पई गोटे क्लासरूम रे डिजेबल्ड चिल्ड्रेन जो माने अछंती कोन हबा दरकार बी 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 कहार तो आंसर ए बोली आसीनी ए हबनी ए कहीं हबनी मु जदि कहबे ऑप्शन ए ठीक कि लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट एलआरई प्रिंसिपल सजेस्ट कौन करूचे स्टूडेंट डिजेबिलिटी पई ना बी एजुकेटेड विथ नॉन डिजेबल फियर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एप्रोप्रिएट जो पर्यंत एप्रोप्रिएट हेई परुची जो एक्सटेंट पर्यंत पॉसिबल हे परुची नॉन डिजेबल माने किए नॉर्मल चिल्ड्रन तो हमर इंक्लूसिव एजुकेशन नो मेन मोटो कोन ना हमें नॉर्मल चिल्ड्रन को सहित कौन करिबा ना से मानको बसई की पढाइबा काहे के हेई परिबनी डी हला बी टॉट ए स्पेशलाइज्ड टीचर इन 1-to-1 सेटिंग एट ऑल टाइम सेटा नुह आमे इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशलाइज्ड टीचर 1-to-1 पिलांकू सेटिंग रे ऑल टाइम्स पढ़ाइबा से पॉसिबिलिटीज कथा रखी ना है देन आसिला कोन ना ओनली अटेंड स्कूल फॉर हाफ डेज आमे केबे भी से मानको प्रोवाइड करिबा नाही देन आसिला ऑप्शन बी जोटा तुम मानकर मोस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड इन ए जनरल एजुकेशन क्लासरूम रिगार्डलेस ऑफ देयर नीड्स तो एठी कुआ गला कि आमे केवल कोन करिबा तांकर नीड्स एठी तमे पढ़ी पाइलनी कि रिगार्डलेस ऑफ देयर नीड्स तांकर नीड्स जहा थाउ पछे के आमे तांको कोन करबा केवल जनरल क्लासरूम रे ही प्लेस करबा केमिति तांकर नीड्स को तमे देखिबनी रिगार्डलेस ऑफ देयर नीड्स तमे कोन करबा तांको केवल नबो गोटे जनरल क्लासरूम रे मु ए क्लासरूम रे पढौची नॉन डिजेबल पिला मानु आन जो माने डिजेबल तांको केवल प्लेस करै देली सेही क्लास रे ही नै कि तांको बसै देली आ कहि देली तू जहा बुझुचु बुझ तू जहा पढुचु पढ़ मते त नीड्स रो फरक मिलुनी किंतु मु ताकू नै कि केवल जनरल क्लासरूम रे ही बसौची फर्स्ट ऑप्शन कौन कहला बी एजुकेटेड विथ नॉन डिजेबल फियर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एप्रोप्रिएट जेति के एक्सटेंट पर्यंत एप्रोप्रिएट हेई पारुची जेति के एक्सटेंट पर्यंत पॉसिबल हेई पारुची आमे कोन करबा ना सेही डिजेबल चिल्ड्रन को नॉन डिजेबल माने नॉर्मल छुआ को सीडब्ल्यूएसएन छुआ के सहित मिसई की सेति के दूर रो पाठ पढाया पई चेष्टा करबा जेति के पर्यंत एप्रोप्रिएट बा आम पक्षरे पॉसिबल हेई पारुची ओके तो आमर कौन कहि सीडब्ल्यूएसएन ने कौन कहि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स ओके तो तांकर जो स्पेशल नीड्स एडी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हमें काई कहले कि छुआंकर जहां भी स्पेशल नीड्स अछि सेठी गोटे जनरल क्लासरूम रे टीचर दायित्व रहउची तुम समस्तंकर स्पेशल नीड्स आ इंटरेस्ट को फोकस करबा आ जदी मु तुमरा स्पेशल नीड्स आ इंटरेस्ट को फोकस करू नाही सेटा केबे भी इंक्लूसिव क्लासरूम हेई परिबा नाही and least restrictive environment माने आमे सेठी कोनोसी रेस्ट्रिक्शन रखिबा नाही बहुत कम रेस्ट्रिक्शन जोटी छुआ माने वैल्यू फ्री करिवे सेफ एनवायरनमेंट फील हबो से माने तांकर वॉइस रेज करि परिबे एवं कोन करि परिबे ना फ्रीली से एनवायरनमेंट रे निजे एजुकेट हेई परिबे आमे जदी तांकर नीड्स को फोकस करिबानी केवल क्लास में प्लेस करि दबा ताले तांकर डेवलपमेंट पॉसिबल नुहे ओके Do number which of these is a key element of successful individualized education program IEP option A a legal waiver that extends the school from being responsible for the students learning B a list of the student weakness without mentioning their strength C a generic set of goals that apply to all students in the same grade level D measurable annual goals and a description of how progress will be tracked. कौन हम पिला माने
ए पुणी बड़ ऑप्शन बोली ये देला ना पाठ पढ़ी के एटा दउछ से कौन कहला व्हिच ऑफ दिस इज ए की एलिमेंट ऑफ सक्सेसफुल इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम a legal behavior that expand the school from being responsible for the students learning a list of the students weakness without mentoring their strength eta to habo nahi a generic set of goals that apply to all students in the same grade level eta konasi grade katha nuhe au rahila option A and D कोटा habo सुजाता मु चेक करूची काहेकि ना सब जिनस रे टाइम लागबो जने पढौथिले को जिनस पढै छंती को चैप्टर बाकी अछि जदी जने टीचर 10टा क्लास देई छंती मा ताले काहे कि 10टा क्लास देई छंती को सब्जेक्ट से पढिया में 10टा क्लास देई छंती सेटा देखिबा पई टाइम लागबो निहाती बाबरे मु पढेबी तम माने पैसा देइछ माने पैसा केबे भी वेस्ट जीव नाही एंड तम मानकर एग्जाम केबे भी खराब हबो नाही प्रिपेयर हेइछ माने आरंभ करिछ माने शेष निहाती करिवे बास टिके टाइम लागुची सब जिंस देखि कि बने पई किछि किछि बैच रो रही जाईची तो डोंट वरी क्लास कवर अप हबो ओके डी हबो ना ए हबो आ थरे कहलो जो माने ए कहउछ ए काहे कि हबो जो माने मैम काली ना ना मोर काली उपरवली है नथिला मु कहबी आंसर डी इज द करेक्ट आंसर जदी ए कही प्रूफ करि परछ ए प्रूफ कर ए लीगल बिहेवियर दैट कोनोसी लीगल बिहेवियर एमती नाही कि एक्सटेंड करिवो कोन ना द स्कूल फ्रॉम बीइंग रेस्पोंसिबल फॉर द स्टूडेंट्स लर्निंग ओके individualized educational program रे measurable annual goals and a description of how progress will be tracked तो एथिरे मेन फोकस कौन करा जाए ना टीचर इंडिविजुअलाइज स्टूडेंट रो कौन नीड्स अछि कौन फोकस अछि जो माने डिजेबल चिल्ड्रन जो माने सीडब्ल्यूएसएन चिल्ड्रन से माने कौन नीड्स करूछंती सोसाइटी रे कौन नीड्स करूछंती एनवायरनमेंट रे सेही फोकस करिके प्रत्येकटी पिला को प्रोग्रेसिवली पढेबा पई चेष्टा करिवे तांकर नीड्स तांकर इंटरेस्ट फुलफिल करिया पई चेष्टा करिवे सेही हिसाब रे पाठटी को तांको स्ट्रेटजी रे प्रोवाइड करिवे एंड कोन ना सब बेले मेजर करूथिबे जदी मु जणे हियरिंग इंपेयर्ड छुआ किबा मेंटली रिटार्डेड छुआ किबा मु इंटेलेक्चुअल लो छुआ को पढौची ताले एनुअली तार प्रोग्रेस केते हेई पारुची तार केते प्रोग्रेस हेई पारु नाही मध्य इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम रहला हमें ताको मेजर करी करी जाउथबा जो गोल रे हमें ताकू एक्स्ट्रा सपोर्ट एक्स्ट्रा रिमेडियल वर्क प्रोवाइड करूछे से गोल केते की फोकस होउची केते की होउ नाही तार प्रोग्रेस को हमें मध्य इथरे ट्रैक करी करी जाउछे आईपी माने कोन एठी बड़ बड़ अक्षर लिखा है छी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम नेक्स्ट हला कोन ना को टीचिंग इज ए कॉमन स्ट्रेटजी इन इंक्लूसिव क्लासरूम व्हाट डज स्टेशन टीचिंग इन्वॉल्व ताले स्टेशन टीचिंग ता कोन कहि थाए को टीचिंग गोटे कॉमन स्ट्रेटजी सेही भितरे स्टेशन टीचिंग आसी थाए से स्टेशन टीचिंग रो माने कोन टीचर्स डिवाइडिंग द कंटेंट एंड स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप that rotate through different activities na option B both teachers delivering the same content to two separate halves of the class na one teacher leading the whole class while the other teacher observes na D one teacher providing intensive instruction to a small group while the other manages the test कोटा हबा पिला माने स्वागतिका कहलेनी ए ओके
Yes, option A. Teachers dividing the content and student into small groups that rotate through different activities. जो माने भी option A कहिछ, option A ही correct answer हबो कि टीचर्स कौन करिवे कंटेंट को डिवाइड कर देबे एवं स्मॉल ग्रुप करिकि पिला मानको को टीचिंग प्रोवाइड करिवा पई चेष्टा करिवे। ओके, जो माने बी दउथलो बी हबो नाही, एठी ऑप्शन ए ही एप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन डी सबुठारु बड़ अछि सेटा मध्य हबो नाही। एमिति परीक्षा रे जदी आसी देला ताले आसी जिवो, आसी देला माने सबु थर गटे पचारिबोनी पियाजेट रो स्टेजेस केतेटा बोली। स्टेशन टीचिंग कौन जने पचारछन? स्टेशन टीचिंग होउछि गोटे कोऑपरेटिव मेथड रो टीचिंग लर्निंग मेथड। ओके, कोऑपरेटिव वे रे कौन करबा टीचिंग स्ट्रेटजी जोथरे क्लास टा स्मॉल स्मॉल ग्रुप रे डिवाइडेड हेथिबो एवं स्टूडेंट माने डिफरेंट स्टेशन रे डिवाइड हेथिबे बा होइथिबे। एटा गोटे कोऑपरेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी। ए कोऑपरेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी रे कौन होई थाए? स्टूडेंट माने डिफरेंट स्मॉल स्मॉल ग्रुप रे डिवाइड हेई थांती एवं कौन करे जे तांको रोटेशन न करा जे। सपोज मु आज ग्रुप 1 ने अछि, काली फुणी मते आ गोटे असाइनमेंट देला बेले मते ग्रुप 2 को रोटेट करा जिवो, फुणी ग्रुप 2 रो ग्रुप 3 को, माने समस्त मिसी की कोऑपरेटिवली हमें गोटे लर्निंग टास्क को केमिति कंप्लीट करबा सेटा होची स्टेशन टीचिंग रो मेन एम, जो उथरे की स्टूडेंट मानको डिवाइड करके स्मॉल स्मॉल ग्रुप रे हमें असाइन करबा। ओके, नेक्स्ट कि which barrier to inclusive education is considered attitudinal? को barrier टा को inclusive education ने attitudinal बोली कुआ जाई थाए? कोटा कुआ जाए पिला माने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, ऑप्शन डी लो एक्सपेक्टेशन हेल्ड बाय टीचर्स रिगार्डिंग द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स विथ एबिलिटीज। एटा भी बुझो कि ना बुझो, बड़ा ऑप्शन बोली मारी थिबो तो कौन ना 5 नंबर द सोशल मॉडल ऑफ डिजेबिलिटी सजेस्ट दैट डिजेबिलिटी इज कॉज्ड बाय। तो जो सोशल मॉडल ऑफ डिजेबिलिटी अछि से कौन कहि, कौन सजेस्ट करिछि डिजेबिलिटी कौन पई हे थाए? ना जेनेटिक फैक्टर्स पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स, ना a lack of motivation on the part of the students, na the medical condition of impairment of the individual, na the way the society and the environment are organized। कोटा हबो पिला माने 5 नंबर। Absolutely correct, option D the way society and the environment are organized। social model of disability माने आमे जो वे रे ही डिजेबल को अपरानित करिचे, आमे जो एते प्रकार ना दउछे, एते प्रकार जो कहूचे किसी हैंडिकैप्टा सेटा देखिथिबो ओडिया रे, ए सब मु मने करूनी सोशल मीडिया रे ठीक बोली कहिबा, किंतु तमे माने मध्य फील करिथिबो कि आम डे टू डे लाइफ रे आम सोसाइटी रे डिजेबल लोक मानकू विभिन्न प्रकार ना रे नामित करा जाउछि। काहेकि ना आमे एटा आम तरफ रु ही सोशली गोटे मॉडल हिसाब रे डिजेबिलिटीज को ऑर्गेनाइज कर देछे। आमे जो हिसाब रे जो थॉट रे डिजेबल को देखुचे सेही हिसाब रे ही आमे कंसीडर करूचे। ओके, नेक्स्ट आसला कोन? डिफरेंशिएट इन इंस्ट्रक्शन रिफर्स टू व्हाट? A teacher adjusting their pace, level or delivery to meet the diverse needs of the learners. Now option B standardizing all tests so that every student is treated exactly the same. Now option C grouping students by ability and never allowing them to mix. Option D
teaching different subjects to different students based on their intelligence scores. कोटा हबो 6 नंबर बहुत बढ़िया 6 नंबर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कौन ना ए टीचर एडजस्टिंग देयर पेस लेवल और डिलीवरिंग टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन बा डाइवर्स नीड्स ऑफ द लर्नर जहाँ फल कि से डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन को चेंज करती निज को बैलेंस करती निजर लर्निंग प्रोसेस को चेंज करती सब किसी चेंज करके बैलेंस करके ही से टीचिंग प्रोवाइड करती नेक्स्ट आसला कौन Now, school-based continuous and comprehensive evaluation is useful for the students to reduce stress, make evaluation regular, judge their homework. Now, all of the above. वेरी गुड बहुत बढ़िया ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव देन कौन 8 नंबर ए टीचर इन ए मल्टीकल्चरल क्लासरूम would ensure that the assessment considers the following reliability and validity of assessment tool socio-cultural context of students na expectation of school administration by complying with the minimum level of learning standardization of the assessment tool वेरी गुड सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होय रे मल्टीकल्चरलिज्म अछि सी किए दउछ कि रे हां सब कथा रे त आमे खाली देखि देबु ट्रेन लाइन ट्रेन डबा जोटा बड़ा हेथिबो सेटा जिंदाबाद भाबी दियो से पचारि छी टीचर इन ए मल्टीकल्चरल क्लासरूम वुड एंसर दैट द असेसमेंट कंसीडर द फॉलोइंग मल्टीकल्चरल क्लासरूम रे से आ सत सब कथा रे ट्रेन लाइन जोटा ट्रेन लाइन आमे सेटा को धरिबु तो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट को से फोकस करके असेस करी थे ओके नेक्स्ट देखो इन असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट इज कंसीडर्ड असी काहे डीटा बड़ ग्रे एठी इवैल्यूएशन थ्रो लर्निंग हबनी की डीटा मते तो लंबा लागुची सी काहे हबो स्टार्ट 10 टा गुरु शुक्र शनि एठी लिखि देछि पिला माने 10 एम रे ही क्लास स्टार्ट हबो एठी डीटा बड़ ना मते तो लंबा डीटा देखाउ छी सीटा काहे हबो ना ना असेसमेंट आज लर्निंग काहे हबो इवैल्यूएशन थ्रो लर्निंग हबो काहे हबो सीटा एटा तो हबो एटा तो मो आखी को भलो देखाउ छी तम आखी को देखाउ दबो एटा लंबाटा यस ऑप्शन सी असेसमेंट एज लर्निंग फॉर लर्निंग ता कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोन ना समेटिव असेसमेंट ओके नेक्स्ट who proposed the two factor theory of intelligence Thornstone, Spearman, Gardner, Sternberg. Yes, Spearman. से कौन कहितले टू फैक्टर रे गोटे हला जी फैक्टर गोटे हला एस फैक्टर जी फैक्टर जनरल ये कौन ना स्पेसिफिक
जनरल फैक्टर जोड़ा जेनेटिकली आमको इनहेरिटेड पेरेंट्स को ठारो आसी थाए जेनेटिकल एटा कोन ना एक्वायर्ड आमे सोशल एनवायरनमेंट रो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ता एक्वायर करी थाउ ओके एठी से क्वेश्चन अछि अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन जी फैक्टर स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट बा primary mental abilities theory was proposed by पिला माने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के प्रपोज करिसंती थॉर्नस्टोन बिनेट समस्त गोटे गोटे ना कहलेनी कोटा हबो फाइनली कोटा हबो तो जो माने थॉर्नस्टोन कहउछ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर थॉर्नस्टोन बिनेट नुआ नेक्स्ट ताहले एटा आंसर भलो भाबरे देई परिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थॉर्नस्टोन अनुसार ए भितरु कोटा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नुआ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन न्यूमेरिकल एबिलिटी स्पेशियल म्यूजिकल इंटेलिजेंस कोटा हबो पिला माने सी सी समस्त कहलेनी ओके देखिबा केते जनकर कोन रेस्पॉन्स आसुची यस तांका थिरे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन थिला न्यूमेरिकल एबिलिटी थिला स्पेशियल थिला बट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेंटल एबिलिटी म्यूजिकल इंटेलिजेंस ता आसीबो नाही ओके नेक्स्ट है theory of multiple intelligence as given by Sternberg, Gardner, Piaget, Guilford. Theory of multiple intelligence was given by whom? बी हावर्ड गार्डनर ओके एटा एग्जाम रे पढ़ी थिला इथरक ओटीटी एग्जाम रे इथरक पढ़ी थिला एही क्वेश्चन टा यस हावर्ड गार्डनर एटा ओटीटी एग्जाम रे इथरक डायरेक्ट पढ़ी थिला मल्टीपल इंटेलिजेंस रो फादर किए जोटा कि कुहा थिला हावर्ड गार्डनर स्टर्नबर्ग कौन करथिले गिलफोर्ड कौन करथिले पियाजेट कौन करथिले पियाजेट करो तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टर्नबर्ग करो कौन आ गिलफोर्ड करो कौन एसआई मॉडल कहा रही भितरु स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मल्टीपल फैक्टर थॉर्नडाइक ओके स्टर्नबर्ग कौन करथिले भितरु छाड़ तमनकर आंसर ही आसीबनी टार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय
15 नंबर बी ओके एना पचारुथुली जे हेलानी आंसर कहबा पई स्टर्नबर्ग रो कोन टार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय स्टर्नबर्ग देन कोन ना द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय एबे ही आंसर आसी गला सेते बेले पचारुथुली कहू नथलो एबे कुआ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बाय एसओआई मॉडल गिवन बाय होम एबे ठीक आंसर दबा किंतु सेते बेले पचारले के आंसर दो नथलो हमहु खाली ऑप्शन दरकार हमें ऑप्शन देखिले ही आंसर दबो जेपी गिलफोर्ड नेक्स्ट देखिबा इमोशनल इंटेलिजेंस कांसेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय गार्नर डैनियल गोलेमैन थॉर्नडाइक टर्मैन हमर जो इमोशनल इंटेलिजेंस कांसेप्ट अछि सेटा पॉपुलराइज्ड कहा द्वारा हेछि गार्नर डैनियल गोलेमैन थॉर्नडाइक टर्मैन टंग 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 यस बी डैनियल गोलेमैन तापरे द फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय टर्मैन बिनेट स्फियरमैन वेस्लर फास्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किए करिथिले ए भितरु यस बिनेट ही करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिनेट 18 नंबर करेक्ट आंसर आईक्यू रो फार्मूला कोन MA/CA into 100 next asla what is the primary characteristics of creative thinking convergent thinking divergent thinking critical thinking analytical thinking primary characteristics कौन divergent thinking रो sorry creative thinking रो mental age divided by chronological age into 100 okay yes option B divergent thinking तापरे आहुरी बंते अछि नोबेलिटी फ्लुएंसी यूनिक तो ये सब गुडा गोटे गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होची क्रिएटिविटी रा ओके फ्लेक्सिबिलिटी डाइवर्जेंट थिंकिंग ओरिजिनलिटी नोबेलिटी नेक्स्ट असला कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू एनहांस क्रिएटिविटी कहा द्वारा हमें क्रिएटिविटी को एनहांस करि परिया पिला माने yes brainstorming is the correct answer next the theory of psychoanalysis was proposed by तो जो psychoanalysis theory अछि तो सही theory टा के प्रपोज करिथिले बीएफ स्किनर इवान पावलोव सिगमंड फ्रॉइड ना कार्ल रोजर्स psychoanalysis theory फ्रॉइड का थ्योरी को आहुरी कौन मध्य कुआ जाए ना साइकोसेक्सुअल थ्योरी मध्य कुआ जाए साइको एनालिसिस थ्योरी मध्य कुआ जाए तो तांको थ्योरी को नै कि साइको सोशल थ्योरी किए देथिले ना अंको थ्योरी को नै कि साइको सोशल थ्योरी एरिक एरिक्सन देथिले तो ये कौन कहिसंती ना साइको एनालिसिस थ्योरी प्रपोज करिसंती नेक्स्ट
According to Freud, the id works on reality principle, pleasure principle, morality principle and learning principle. तांकर जो ईद इगो सुपर इगो अच्छी से ठारे से जो ईद को यूज करिसेंदी यूज टा को प्रिंसिपल को प्रिफर करे. Pleasure principle. Next आसला the ego operates on pleasure principle, reality principle, moral principle. कौ principle ऊपर ego टा ego हला कौन ना reality principle. Yes, ego टा होची reality principle. Then कौन now a student behaves confidently in class but feels inferior internally. This reflects a gap between id and ego, real self and ideal self, temperament and character, trait and type. 25 नंबर कौन हबो? Real self and ideal self. Okay. The concept of self-actualization is central to psychoanalytic theory, trait theory, behaviorism, Abraham Maslow's humanistic theory. Yes, Abraham Maslow's humanistic theory. Next है कौन ना in psychoanalytic theory defense mechanism operate mainly at the level of conscious mind, preconscious mind, unconscious mind, moral mind. 27 नंबर कौन हबो? pedagogy. Humanistic theory. कोटा केते तो थियोरी अछि सब थियोरी रो क्वेश्चन आछू को थियोरी कथा कहबी मु देखुची सेते बेलठू देखुची तमे से कंटीन्यूअस क्वेश्चन बचारछ थियोरी कहले एजुकेशन ने मोस्ट ऑफ द थियोरीज अछि एंड तमरा सिलेबस रे टीचिंग एप्टीट्यूड रे सेमिति कोनोसी थियोरी स्पेसिफिक थियोरी कथा मेंशन नाही से थियोरीज लर्निंग थियोरीज दे लर्निंग थियोरीज हेले सी हॉल हे परिबो से पियाजेट हे परिबो से वाइगोट्स्की हे परिबो से तमरा ह्यूमनिज्म थियोरी कार्ल रोगर्स हे परिबो पर्सनालिटी थियोरी हे परिबो अल्बर्ट कर हे परिबो तमरा कैटलिन कर फैक्टर थियोरी हे परिबो तमरा दुनिया जाकर थियोरी अछि तो सब थियोरी अछि तमे जो थियोरी को पढ़ी परिबो एग्जाम रे को थियोरी आसीबो से कोन कहि के आसीबो मैम सब थियोरी रो नेम कहि दियंतु ना कहिबेनी मैम अलिशा या कोन जानछि ओदे हमरे पिल्ला छले अर्पिता डाका ट्रुप अलो ये की ना ये खुशी रा ना सब पियाजेट गुड मॉर्निंग ये मैम ओटेट रो क्लास चलछि सबु सबु आपनकर भलो जास्मिन सुभाषिस सबुठी विद्यमान काली सुभाषिस गोटे क्लास रे नथिला बोली सुभाषिस को खोजा चलथिला कहबिनी किए सुभाषिस और चंदन सबु पेडागोजी क्लास रे विद्यमान जोठी पेडागोजी चंदन मो क्लास भी करे सुभाषिस मो क्लास भी करे मु ए दिजन जा समस्त क्लास विद्यमान नहले लोक माने खोजुसंदी आ चंदन भाई आज बिजी अछंती आसीना आंती सुभाषिस भाई चंदन भाई कोडे गले नुआ के हाय तारेटु कहबे मैडम आम पछरे लागी जाइछंदी आम पछरे स्पाई लगै कि देखुछंदी आमे कोठी कोन करूछु नियाती सब करिवा पिला माने पेशेंस रखो जेमति कि छड़ा मुसे छुआ दिडा पछरे बेकार डर लागि छि जस्ट जोक करछि रे केई दिजन जाक देह को नबनी चंदन के सुभाषिस
तो कौन ना काली जने कहूला ना सुभाषिष जानी थी सुभाषिष कि छाड़ कहबिनी आ मैम मु भी रेगुलर मो क्लास नु कुछ सब क्लास जोठी भी तमे देख जोठी भी पेडागोजी क्लास होतबो टिके लाइव क्लास अटेंड कर दबा सुभाषिष आ चंदन रो अटेंडेंस ता फास्ट रे थिबो केही थांतु कि न थांतु तो ठीक अच्छे कि थ्योरी करवा जमती कि तुम मैंने जो डेफिनेशन गुड़ाक जहाँ अच्छी लर्निंग रो तो से डेफिनेशन गुड़ाक इजी ट्रिक सहित मुझे भावुची कि नेक्स्ट थर आम आणिक आसवा तो सेमती भाव में थ्योरी नहीं आसवा डोंट वरी सब क्लास रे तो सब नहीं आसबनी धीरे धीरे आने चेष्टा करी जहाँ तुम मान डिमांड अच्छी टीचर प्रेजेस ए चाइल्ड ओनली व्हेन शी परफॉर्म्स वेल अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स दिस मे हिंडर इंटेलिजेंस डेवलपमेंट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड सेल्फ कांसेप्ट फॉर्मेशन सेल्फ एस्टीम एंड कांग्रुएंस Yes, option D is the correct answer. अरे देख सब बेले तुम मैंने अटेंटिवली मो क्लास करछो ना मु तुम मानक मन रखी तापर आ गोटे जिनस मु केमिति जानछि तमे कोड विद्यमान होछो बोले देख सपोज तमे केमिति जानछो क्लास टा होछि तमे को चैनल गोटे फॉलो करथबो सेमि मु मते डिफरेंट डिफरेंट चैनल फॉलो करछि समस्त हमें सब चैनल फॉलो करछे काटू पढुचे काटू न पढुचे अलगा कथा किंतु समय आसला बेले गोटे चैनल हमर काम रे आसु तो गोटे नोटिफिकेशन आसला हठात क्लास होछि धर नोटिफिकेशन क्लिक हैला क्लास कोन होछि ना कौन से प्रेजेंट आमर ये छुआ पड़ी थी से मुझे जस्ट टिके मन पड़ा तो सब जिते जो नोटिफिकेशन आसे बेलू ये दिज विद्यमान जहाँ भल ना सबुठी ज्ञान आहरण करने कथा जदि आमको जो मिलूँ सुभाषिष मु सब चैनल तुमको देखी से तो कहली नेक्स्ट होची पर्सनालिटी डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ आइडेंटिटी क्राइसिस एज प्रपोज्ड बाय एरिक एरिक्सन जीन पियाजेट बीएफ स्किनर थॉर्नडाइक कौन हम एटा 29 यस एरिक एरिक्सन इज द करेक्ट आंसर जो थे कि 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ 8टा स्टेज कथा से कही थिले ओके 30 अकॉर्डिंग टू रेमंड कैटेल पर्सनालिटी ट्रेट्स आर मेजर्ड थ्रू इंटरसेक्शन ओनली फैक्टर एनालिसिस ऑब्जर्वेशन ओनली कंडीशंस एक्सपेरिमेंट रेमंड कैटेल मध्य पर्सनालिटी ट्रेट्स विषय कही थिले से कौन कही थिले केमिति पर्सनालिटी टाको मेजर करी हबो यस सोनाली वेरी गुड सरिता मध्य फैक्टर एनालिसिस तो तांकर पर्सनालिटी थ्योरी को कौन कहा जाए पीएफ फैक्टर थ्योरी मींस पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी गिवन बाय रेमंड कैटेल ओके से कहछंती पर्सनालिटी ट्रेट्स को हमें फैक्टर एनालिसिस माध्यम रे मापी पारिबा से टोटल ऊपर 16 फैक्टर विषय रे मध्य कहछंती ओके 16टा फैक्टर थ्योरी विषय कहछंती फैक्टर थ्योरी गिवन बाय रेमंड कैटेल तांकर थ्योरी को कहा जाए पीएफ फैक्टर थ्योरी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय रेमंड कैटेल पीएफ माने हला पर्सनालिटी फैक्टर से 16 पर्सनालिटी फैक्टर विषय बहुत सारा फैक्टर एनालिसिस करी करी फाइनली कहछंती जहां फल कि जो इंट्रोवर्ट एवं एक्सट्रोवर्ट रो क्वालिटी गुडा को रही अछि ओके नेक्स्ट
In educational evaluation, a blueprint primarily ensures what? Attractive question paper, equal marks to all units, content validity of the question paper, difficult questions only. Yes, content validity of the question paper जोटा के एबे हमर पढ़ी थिला कोउथरे ना OSST. Next आसला कोन ना a blueprint is prepared before setting a question paper to maintain what? B. Yes. Next. Key, which of the following is not a component of blueprint? Content areas, objective, mark distribution, examination, salary. Next, a blueprint helps in mapping questions according to Bloom's taxonomy label, teacher's mood, student patterns, and school timing. Bloom taxonomy label ही यार correct answer होगा पिला मने. Next, higher order thinking skill is missing in a test. The blueprint tags proper distribution of units, marks, cognitive objectives, na questions only. Next, Rina, 3 years old, believes that the moon is following her wherever he goes. This is an example of C कौन ना animism. Okay, yeah, the answer there 37. A child says, my doll is crying because he is sad. This thinking belongs to which stage? Sensory motor, pre-operational, concrete operational, formal operational. A child says, my doll is crying because he is sad. It is co stages of development given by Piaget. Yes, pre-operational. Next, K38, a teacher gives algebraic problems to 15-year-old student. According to Jean Piaget, this is suitable because they are in which stage? Formal operational. Next, 39. Brunner's theory is mainly associated with behaviorism, constructivism, psychoanalysis, humanism. तो यार राइट आंसर होची कंस्ट्रक्टिविज्म हे गला
तो एठी हमर आजिर क्लास टी एंड हेछि एंड जो माने इंटरेस्टेड अछो पिला माने जेटी बैच जॉइन करबा पई यू कैन जॉइन अभिनव 4.0 क्लास 1 to 5 and 6 to 8 कोड टा ऊपर अछि YT46 यूज करि पारिबो इफ यू वांट टू अटेंड OTET एंट्रेंस पेपर 1 और पेपर 2 तम माने मध्ये जॉइन हेई पारिबो पिला माने एंड आउ थरे कहि दि एठी जेमते कोड मेंशन अछि एठी टाइम भी मेंशन अछि केही भूलिबो नाही कि 10 टा बेले क्लास जॉइन करिया पई क्लास अटेंड करो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो जेते क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करबो ए क्लास रे तो तुमको पैसा देबा को पडुनी जे आमे कंजूसी करबा गले OTT क्लास स्टार्ट होछि सुजाता 2 मार्च रु ओके जदि केही OTT पेपर 1 पेपर 2 नबा पई चाहू थिबे ताहाले स्टार्ट होछि 2 मार्च रु आपण माने कोड यूज करि परिबे YT46 किछि प्रॉब्लम थिले मध्ये आपण माने कोन करि परिबे ना जो ऑफिशियल नंबर टा इट स्क्रीन ऊपर शो करूची सेइथिरे कॉल करि परिबे ओके सीडीपी बाय सुनीता मैम मारी दबा निहाती तुमको मिल जिबा ओके यस बैच रे क्लास सब आजी ता सहित जो माने एसएसबी टीजीटी बैच रे मध्ये जॉइन होबा को चाहू जॉइन हे जिबा एंड जो माने जानिया को चाहू कि रिक्वायरमेंट केबे आसुची ताले मु कहि रखे एसएसबी टीजीटी रा एपर्यंत तमर किसी 5000 पोस्ट कछा नाही से 1823 ही अछि ता सहित जेटी तमर जुलाई पूर्वरु आसीबार नाही जुलाई पूर्वरु आसीबो नाही मोस्ट प्रोबेबली तमरा मे मास रे ओटीटी एग्जाम सरिला परे ही तमरा जोटी रा नोटिफिकेशन आसीबो तो मे मास जाय तमे पूरा पूरी टाइम पाउछो कि तम निजकु सेतिकी दम रे प्रिपेयर रखिया पई एग्जाम टी क्लियर करबा पई ओके थैंक यू एवरीवन देखा बा काली रा क्लास रे